Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra, Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with PGT KVS syllabus, and especially these days we are studying the literary portions. As I have already told you that the syllabus for KVS PGT is actually from the NCERT books prescribed in our 11th and 12th standards, and it's easily available at any bookshop that city or town area or even in villages you belong to. And in our previous class we could have a discussion and a study over the work of Khushwant Singh, The Portrait of a Lady. And today we have to move with the next and with a similar theme actually. The theme of the work is going to be similar, and that is a photograph, and that's the work of Shirley Toulson, a British story writer, poet, journalist, and actually politician she had been. So today's study is based on a poem from Kathleen Shirley Toulson. Kathleen Shirley Toulson. Her poem is A Photograph. That we will study here in the class today. But before we move to this class, we have to go through the question session where I will put the questions from your formal learning in the class, and that goes here. What was the pet name of Khushwant Singh? That's the first question of the day. What was the pet name of Khushwant Singh? No, Khushbu. Khushal was actually his academic name. And we have the answers from Sachin and Kanchan. Gyaneshwar. It's not Shirley, Vineta. So right answer is Shirley, that we find as a pet name of Khushwant Singh in his childhood days actually. Moving with the next one. When did Khushwant Singh receive Padma Bhushan? When did Khushwant Singh receive Padma Bhushan? That's the next question. When did Khushwant Singh receive Padma Bhushan? That's the question. Okay. Oh, no. It's the Padma Bhushan, Vineta, not Vibhushan. So right answer is coming here from Sachin, and is followed by Khushbu. Gyaneshwar is 74, not 73. So in 1974, he received, okay Vinita, Padma Bhushan. What was the name of the father of Khushwant Singh? What was the name of father of Khushwant Singh? Okay, and we have the answer there on the screen coming from Sachin, is followed by Vineta, and they have answered it correct. That is Sir Shobha Singh. Exactly, Sir Shobha Singh was the name of his father, not Sir Khushbu. She has also answered it correct. Okay,
Going with the next question. Which accompanied or what accompanied grandson and grandmother to school in their village? What accompanied grandmother and the narrator in the village in the story, The Portrait of Ladies? Okay, and we have the answers. That starts with the reply of Khushbu. She is followed by Kanchan, Sachin, Kaneshwar, Kavya, Vinita. Okay, they have all answered it correct. And the right answer is the street dogs that accompanied grandmother and the narrator when they used to go to school and even when they come back from the school. Okay, what was the reason behind leaving city for abroad by the narrator? What was the reason behind leaving city for abroad by the narrator in the story, The Portrait of a Lady? Okay, and we receive answer there on the screen, starting with the reply of Kanchan and okay, that's good one, Gyaneshwar and Sachin. They have answered it correct, and that was actually for higher education. For higher education, education he was getting, no doubt, but for higher education, he left his village, his city and went abroad. Okay, going with the next one. Whom did grandmother call to celebrate the returning of victorious soldiers by the end of the story, The Portrait of Lady? Whom did the grandmother call to celebrate the returning of the victorious prince or victorious soldiers by the end of the story, The Portrait of Lady? Whom did she call? Okay, and we have the answer. That starts somewhat with Sachin, much better from, okay, Kanchan. No, Gyaneshwar, that's not so. Khushbu, Kavya, okay, Gyaneshwar, and Vinita. They have all answered it correct, and the right answer is neighborhood women. She actually invited, she called to celebrate the returning of the victorious prince or victorious soldier towards the end of the story, The Portrait of a Lady. Who offered the pieces of bread to the sparrows after the death of the grandmother? Who offered the pieces of bread to the sparrows by the end of the story after the death of the mother? Okay, and we have the answer that starts with the reply of good morning Anil and good morning Vinita. So right answer starting here with Kanchan, and she is followed by Sachin, Kavya, Khushbu, Vinita, okay, and Gyaneshwar. They have all answered it correct. The right answer was the mother of the narrator. Okay, narrator's mother. That was after finding the gathering of almost thousands of the sparrows
around the dead body of grandmother. She thought they would be hungry, and that's why she decided to give them the pieces of bread, but they did not touch even a single piece. Okay, going with the next. What was the reason behind the emotional departure of the narrator from his grandmother when he was going abroad? What was the reason behind the emotional departure of the narrator when he was departing from his grandmother for the higher education in abroad? What was the reason? What is that, Vinita? What was the reason behind the emotional departure for higher education by the narrator? And we received some answers there on the screen. Oh, no, dear, not that. Because he didn't expect to see his mother after 5 years. What he thought actually was the last physical touch, though it was just simple kiss actually on his forehead from the grandmother. It was just a last physical touch, and just so you can understand his emotion, he expected that the grandmother would not be surviving and he will come back after 5 years from abroad. So I think that was the main reason that their separations become more emotional. Okay, going with the next one. What was the reason behind the no communication between grandmother and the narrator? What was the reason behind no communication between the grandmother and narrator? Exactly, Gyaneshwar, that's the right effort. Okay, and well, no. Age gap is not the reason, Kanchan. Exactly, Khushbu, that is. He received a separate room, and with receiving the separate room, after he started graduating, and the parents thought that they should be separated. Before that, grandmother and the narrator used to live together, and little bit communication, like what he was taught and how was he taught, all such things were inquired by grandmother. But yes, after receiving the separate rooms, she and the grandson almost lost their even a single connection that they used to have, and that was the reason behind a no communication after that. You don't find any kind of communication between the two after the separation of their room. Which thought is meant here in the statement? The thought was almost revolting in the line. Which thought was meant here in the statement? The thought was almost revolting. Which thought was meant here? The thought of almost revolting. Which thought was the author talking about in the statement,
the thought was almost revolting. Which thought was the author describing or talking about in the statement? The thought was almost revolting. Come on. This is a very early expression used. No, Khushbu. Actually, grandmother was beautiful, that he knew. There had been some different aspects. You are close. What thought was he talking about when he said the thought was almost revolting? That's the question. You made a right effort, Khushbu, but that was not, that's somewhat. No. There had been most of these things, and particularly she was being called by the neighbors that she had been young, she had been pretty. To be young and to be pretty was something that for author was an absolutely wrong thing about grandmother, because what he could see for almost 20 years, he saw that the lady is with a bent body, wrinkles on the face, and all the time praying. She never looked pretty, she was never young. And to believe this, the thought was to believe that she was young and pretty was actually the thought against what he saw that was revolting. So to be young and to be pretty was actually the thought that was revolting here. What was the sense when the narrator used the expression, an expanse of pure white serenity? What is the sense of the expression according to the story? An expanse of pure white serenity. What is the sense of the expression, an expanse of pure white serenity? What does this expression mean in the story, the portrait of a lady? As you see, we are continuing with the class for PGT KVS, and it's almost free. Those who actually want to be the part of this class to receive the notifications on time, simply just message on our contact number. That's our actually telegram number, 9369542072, and just message your name, just message your course, and this is actually free course that we are running, and we will add you in that group of KVS PGT if you want to be added there. And let's see the meaning of the expression, an expanse of pure white serenity. What does that mean? And well, Sachin says, because he was seeing his grandmother old for 20 years, but his neighbors told, okay, last question you actually answer. That's nice one, Khushbu, right effort. Actually, grandmother looked a face of peace and contentment. Grandmother looked a face of peace and contentment, and for that expression, actually the author, the narrator, compared this peace and contentment with all that you can say like white locks and almost white dressing, all such things, to the mountain or landscape of among the mountains, a landscape that's surrounded by mountains and all the time covered with snow, and the greenery, the beauty that one receives from that landscape is actually there
in the expression and expense of your white serenity, that is about the beautiful mind, beautiful heart of the grandmother. Right, you move with the last question of the day. For how long did the narrator stay in abroad? For how long the narrator stayed in abroad for higher education? That's going to be the last question of the day. How long did the narrator stay abroad for higher education? Okay, and we are going to receive the answers there on the screen, and that is coming from the reply of Sachin, followed by Vinita, Kavya, Gyaneshwar, Kanchan, Aarti, Mansha, Khushbu. They have all answered it correct, and the right answer is 5 years, exactly as he explained by the story. We could see that the writer had been away from his home for almost 5 years to receive the higher education, and he did not expect to see her when he comes back from his abroad. And that's what the reason, as I told you earlier, had been behind the emotional departure between the grandmother and the son. Okay, right, it's time for us to move to the next, and that is a photograph by Kathleen Shirley Toulson. Okay, we're going to have a short biographical sketch of Kathleen Shirley Toulson. Was born at Dixon, 20th May 1924. She was born at Dixon, and it was 20th May 1924 that she was born, and her schooling started at Pryor's Field School. It's a Pryor Field School where she received her education. This was the school of her education. This was the place of her birth, and we have the date and year of her birth, Kathleen Shirley Toulson. She was born in 1924, and as you see, when she grew up, she was conscious of the two things. One, the past of the First World War, just over in 1918, and even the catastrophic results could be reflected there. Anybody can feel that just 1924, you can see, when she was just 6 or 5 years old, she was very close to 1930. And you see, the world was now getting ready for the Second World War. So the psychology of a man, a person, is very much war affected in those days. I think we someday studied that during even the First World War and even during the Second World War, there had been some writers who criticized this war effort. And if you remember that the war poetry was actually initiated by the gifted poet Siegfried Sassoon, and later on it was popularized by Wilfred Owen. War poetry that actually criticized the nature of war, the importance of war, and especially for those who thought that fighting for country or fighting as a soldier was something glorious. They tried to show what was the right and practical side of war. That was their effort that they were doing. Actually, Shirley Toulson, why I discussed, was related as a worker for Second World War
and that was with the group Auxiliary Territorial Service. Auxiliary Territorial Service. She worked for this group during the Second World War. The Second World War. She was working for this group, that was Auxiliary Territorial Service, and finally she got a chance to study English at Birkbeck University of London. She studied English at Birkbeck University of London. And after studying at Birkbeck, the University of London, she had her own working experience and she worked at Foley's bookshop. Worked at Foley's bookshop. Means just after completing her study of English at Birkbeck University, she went for the work and there she worked at the bookshop named Foley's. Actually, she worked here for auxiliary territorial service, and then for professional, you can say, Foley's bookshop she worked before she became journalist. As a poet, she was a member of the group. The group was actually a group of the poets. The group was the group of the poets, especially popular during 1960s and 1970s. This group of the poet was actually the group of the poets that could meet in London. So the location of the poet group was London. There some poets gathered and they worked together, meeting in London. Okay, it's the 50s and 60s actually, not, okay, it's like 50s and 60s. Means you can see just after the World War II, they organized a group of the poets and was actually named as the group, and the poets were meeting in London, and they were contributing as an anthology, and her poem was also published in this group for the anthology of 1963, and that was a group anthology. Okay, in 1963, a group anthology was published, and in this group collection, she contributed her poem. Well, in her life, she became a little bit controversial with her work that was Playground of England in 1973. Playground of England appeared in a journal that was named The Planet, and it satirized the objectification of Wales. Playground of England. That appeared in 1973 and appeared in the journal named Planet. This journal, Planet, was from Welsh
and actually it satirized the objectification of Wales as a tourist destination by English second home owners. It was actually the objectification of Wales. She was most of the time remembered for walking routes writing, and she wrote many books. One of these related to walking routes was the Drovers' Roads of Wales. The Drovers' Routes of Wales. This was also walking route writing that appeared in 1977. As I told you that this work, The Playground of England, was also somewhat related to walking tours or visiting places. This one, the Drovers' Routes of Wales, that was also walking tour route writing. So most of the time she was writing this type of poems that were related to some places, that were related to some, as I told you, the walking destinations or distances. As a poet, she could write some pieces. She was actually primarily journalist. She was writing. Later on in her life, she became politician as well. And especially in 1962, she was elected as a Labour councillor. She was elected as the Labour councillor. This Labour councillors was for the place, and that was the Wandsworth London Borough Council. I repeat, Wandsworth, W-A-N-D-S, Wandsworth London Borough, B-O-R-O-U-G-H, Borough Council. In 1962, so this had been her achievement as a politician, along with her husband, Ellen Brown John. Ellen Brown John was her husband, and the two had been elected as the Labour councillors in the Wandsworth London Borough Council. And this is how she became politician as well. So she was a writer, she was a poet, she was a journalist, she was a local politician, and throughout her life she contributed as a good human being. And finally, 20th September 2018, she breathed her last. That was 23rd September 2018, she breathed her last. 23rd September 2018, she breathed her last. So she was born on 20th May 1924, and she was born at Dixon. Later on, as I told you, she went to the school, Priorsfield School, and after graduating, getting the early educations, she became the part of the auxiliary territorial services during the Second World War, as I explained here. And then she moved to learn English. She learnt English at Birkbeck University of London, and after completing that work, she worked professionally at Foyles
a bookshop, and now it was time for her to move with her works. And as I told you, during 1950s and 1960s, there had been the group of the poets who gathered and they gave the name to their group, the group, and that was especially for the poets of London meeting there, writing there. An anthology appeared from this group in 1963 that was named a group anthology, and she contributed for this collection. Along with that, she was continuing with her fearless writing, and she did not hesitate to satirize English philosophy or English thinking with the work Playground of England in 1973, where she was actually satirizing the objectification of Wales, and this appeared in a journal named Planet. In 1977, she wrote another very famous work of her, The Drover's Roots of Wales, and that was based on the route walking. And as I told you, she was actually writing for the walking routes, and at last she breathed her last in 2018 on 23rd September. Well, when we come to this poem of Kathleen Shirley Toulson, we come to see that's not primarily a piece that we consider to be the great literary works. Yes, it's based on the memories of the poetess, and what she thought the photographs can do has been there in this work. Actually, when the photograph is there, one point we can highlight that time can be caught only through a photograph. Okay, that's Kathleen Shirley Toulson in her poem, A Photograph. Very much similar to the last work that you studied, the portrait of a lady. If you remember, you will find the both work that you study, they are discussing about a picture, they are discussing about similar thought like missing someone. A photograph is this time related to the mother of the poetess. Of the poetess. Along with mother, she discusses the two cousins of her, and there were the Betty and Dolly. Betty and Dolly, the two cousins of the poetess. Okay, there is description or discussion of uncle. You can say that can be the cameraman. Uncle that has been discussed as the camera man in the poem. The description of the seashore in the poem. And the poem is divided in three irregular stanzas. Three irregular stanzas that you simply can correlate that the three stanzas are actually the three parts of life. If you come to this one as a first stanza, that has the maximum numbers of lines, going with 9 lines in it, with 9 lines as a maximum number of line in this stanza, first one. This is actually related to the
young age of the mother. The mother. We can go with the next description. The second stanza takes us almost 20 or 30 years later. So you can say that the adulthood of the mother has been shown there with a gap of 20 or 30 years. Second stanza that discusses 20 or 30 years later theme that had been the part of the second stanza. This also goes to be the part that reflects on the past with the number of lines to be six lines there in this one. 6 lines in the stanza. The last one is actually about the absence of mother, and that is actually death. The third stanza presents the absence of mother. Absence of mother, you may see it's like the feeling of the death of mother, and this one is the shortest as a stanza with just 4 lines. You see, just 4 lines there in the stanza. 4 lines. So in the first one you see the young age of mother. In the second stanza you see her adulthood. And here in the last stanza you see the absence of mother. That means she is no more. That's symbolizing the death of mother. Actually, the poem is not, I must say, very much artistically strong as we can call any piece, because अगर हम लोग स्टडी करते हैं और ये कहते हैं कि शेक्सपियर की ये पोएम या चॉसर की ये पोएम, मैथ्यू आर्नल्ड की ये पोएम, तो we have not that kind of quality, because the poem seems to be a completely free verse. It's a free verse. And you already know that the free verse is kind of poem that does not follow any strict rules of composition, neither related to syllable, not related to meter, not related to stanza form, nothing like that. Means आप देख सकते हो कि अलग अलग आपको चीज़ें मिल रही हैं. यहाँ पर आप देखो तो थर्ड स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं, और फर्स्ट स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं, सेकंड स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं. This is how the poem has been shaped, and the overall number of lines are 19. 19 lines in all. That's the length of the poem, and they are in free verse. At some places we'll find that the feeling of the poetess is coming out very emotionally, like we could see the poet in the writer in The Portrait of Lady. As I told you that the two had a similar theme. पिछले वाले में आपने देखा था ग्रैंड मदर के साथ किस तरह से एक चाइल्ड का रिलेशन था, और किस तरह से फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ग्रैंड मदर को इस दुनिया को अलविदा भी कहना पड़ा, जो हर किसी को कहना पड़ता है, कोई एक की बात नहीं हो रही है. और यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो शर्ली टॉल्सन ने भी ऑलमोस्ट अपनी मदर को सेंटर किया. वहाँ ग्रैंड मदर थी, यहाँ मदर थी, और उनके भी ग्रोथ को दिखाया है. 3 फेजेस जो स्टेंजाज में हैं आप उनको देख सकते हैं, ग्रोथ को दिखाया. पहला जो सबसे बड़ा टाइम होता है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने नंबर ऑफ लाइन दिया, 9 लाइन्स. आपको मालूम है इस लाइफ में हम लोग बहुत कुछ करते हैं. ये हमारा जो एक तरह का यंग एज होता है, चाहे आप उसमें चाइल्डहुड जोड़िए, चाहे हमारा एडोलसेंस को जोड़िए, और फिर धीरे धीरे अपने आप को हम दुनिया के काबिल बनाते हैं. तो ये एक लंबा फेज होता है जो हम लोग जीते हैं.
उससे थोड़ा सा छोटा हो सकता है जिस फेज को हम बात करते हैं। आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 25 to 30 ईयर्स इसको हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारा टाइम चलता है, और उसमें आप प्लस कर दीजिए 20 और 30 ईयर्स। तो अगर 20 ईयर्स करते हैं तो ऑलमोस्ट 25 से अगर चलते हैं 45 हो जाता है, 30 कर देते हैं तो वो 55 हो जाता है। इस तरह से कैलकुलेट करिए तो ऑलमोस्ट जो अगला फेज होता है वो ये दिखाता है कि अगले बंदे ने जो लाइफ में करनी थी वो उसने कर ली, अब उसके आखिरी वक्त आ रहे हैं, लास्ट टाइम आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज हियर वेरी शॉर्टर वन दैट शोज कि लास्ट का जो टाइम होता है हमारे पास ज़्यादा वक्त बचता नहीं है। आप देखते होंगे लगभग 60 या जो हमारा टाइम होता है, उसके बाद हमारी जो कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी होती है, वेदर इट्स लिटरल और इट्स फिजिकल और समटाइम्स इवन इंटेलेक्चुअल, दैट कम्स टू एन एंड। हम लोग किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को नहीं दे पाते हैं इसके बाद, तो वो बहुत शॉर्टर टाइम होता है। एंड दैट इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ मदर और एब्सेंस ऑफ समबडी दैट टेल्स अस दैट वेदर यू लव समवन और नॉट, that is your personal matter, but this time does not love anybody. The similar feeling had been expressed by William Wordsworth in his Lucy poems. All the time you see how Lucy lost her breath and Wordsworth was just left in emotional desertion, I must say. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लूसी पोएम से चीज़ों को रिलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में आपने देखा कि खुशवंत सिंह या जो नरेटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को कितना लव करते हैं, बट जब वक्त आता है तो उनको छोड़ के जाना पड़ जाता है। इसी तरह से आप इस पोएम में भी देखेंगे शर्ली टॉल्सन ने भी इसी तरह से एक्सप्रेस किया है कि जब वक्त आता है तो सबको वो चीज़ें, वो वस्तुएं छोड़कर जानी पड़ती हैं, चाहे वो कितना भी लविंग क्यों ना हो। कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर होना नहीं चाहता, बट ये वक्त है जो किसी को किसी के साथ बहुत देर तक रहने ही नहीं देता है। तो फाइनली ये चलता है। चले जाते हैं टेक्स्ट में, हम लोग पोएम के टेक्स्ट में चलते हैं। अ फोटोग्राफ फ्रॉम शर्ली टॉल्सन। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, she, the big girl, some 20 years ago or so. देखिए यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स की बातें हो रही हैं और वो फोटोग्राफ्स इनकी माँ की है। वो कब ली गई हैं? लगभग 20 साल पहले। अब आप समझिए कि जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं, शी इज टॉकिंग इवन इन द फर्स्ट वन शी टॉक्स अबाउट द ईयर्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स और सो। इन्होंने कहा है और सो, एकदम फिक्स तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग ये है कि 20 ईयर्स के आसपास वो टाइम रहा हो। तो कहते हैं द कार्डबोर्ड मीन्स कलेक्शन ऑफ photos, or you can simply call to be album of photos, shows me how it was. हम लोग एल्बम्स क्यों बनाते हैं? आमतौर पर अपनी यादों को सजोने के लिए। हालांकि अब तो दौर नहीं रहा, कभी इसका भी दौर हुआ करता था। लोग अपनी शादियों के एल्बम्स बनवाते थे, अपनी बर्थडेज पार्टी जो होती थी उनकी एल्बम्स बनवाते थे, और पीपल हैड ग्रेट फन, ग्रेट टाइम। और आज तो जब से सेल्फी आ गया तब से भी कहना ही क्या है, हम 24 आवर्स में 5 बार फोटोज लेते हैं। तो हमारी अब कोई बहुत कदर रही नहीं फोटोज की, लेकिन वो एक दौर भी था जब फोटोज के लिए लोग भीड़ लगाया करते थे। और जो लोग गांव के सेंस से रिलेट करते होंगे उनको मालूम होगा कि उनके बचपन में फोटोज खींचना और खिंचवाना कितना अहमियत रखता था। और यस, पीपल लाइक अस कैन रिमेंबर कि जब हम लोग छोटे थे तो कैमरामैन आया करते थे, लाइक कैमरामैन हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, और महीने में एक दिन आते थे और गांव में फ़ोटोज़ खींचते थे। तो सारे लोग तैयार होकर के अपने फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। तो दैट हैड बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और हफ्ते बाद, 15 दिन बाद वो फ़ोटोज़ खींच करके ले आते थे। आज तो हम लोग देख लेते हैं किधर ख़राब आया, किधर अच्छा आया है, फिर डिलीट कर लेते हैं। उस टाइम में सिर्फ एक शॉट में आपको परफेक्ट देना होता था। तो we can just experience that excitement of seeing back on those kind of photographs. And even today when we
flashback. Though we are living in a very quite busy timing, I must say that very busy time, very hard time, I must say, for a human being it is. And in those days we had a free time, and people had actually free time. They used to have the joy of looking at the albums of photographs and could feel the joy of their past experiences. तो वो बात अब नजर नहीं आती। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फोटोग्राफ बना हुआ है घर में, और फोटोग्राफ के एल्बम्स को पलटते हुए अचानक से उस फोटोग्राफ पे पहुंच गई। When the two girls cousin went paddling, दो छोटी इनकी कजन्स हैं जो पानी की लहरों पर पैडल करती हुई, छपाक करती हुई आगे चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों जो मेरी कज़न हैं वो मेरे माँ के दोनों हाथ को पकड़ी हुई हैं, मतलब शायद माँ बीच में रही होंगी, एक तरफ दूसरी वाली कज़न, एक तरफ दूसरी वाली कज़न, और दोनों कज़न ने माँ के हैंड को पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि एंड शी द बिग गर्ल, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो बिग गर्ल थी, मतलब इतनी बड़ी थी कि सम 20 ईयर्स और सो, आप कह सकते हैं कि मेरी माँ की एज उस समय 20 साल के आसपास रही होगी। तो शी वुड हैव बीन अ बिग गर्ल। अब 20 ईयर्स में तो काफ़ी आदमी बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, चीज़ों को समझता है और फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है। तो दिस इज वाई सम बिग गर्ल उन्होंने कहा है। बिग गर्ल का सेंस है कि ग्रोन अप गर्ल। तो उन दोनों छोटी कजन्स ने, जो हमारी कजन्स थीं, उन्होंने मेरी माँ के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। All three stood still to smile through their hair. तीन के तीनों लोग थे और तीनों स्माइल कर रहे हैं थ्रू देयर हेयर, मतलब एक हल्की सी स्माइल, हल्की सी मुस्कुराहट जो होती है वो चेहरे पर आमतौर पे कैमरामैन मांग ही लेता है। अगर आप कभी सीरियस होकर के फोटो खिंचवाइए तो कैमरामैन थोड़ा सा आपको बोल देता है कि प्लीज स्माइल, थोड़ा सा स्माइल आपसे मांगता है। और अगर आप मुस्कुरा देते हैं ठीक है। अभी कभी पुराने जमाने वाले फोटोज देखो ना तो कभी डर लग जाता है फोटोज को देख करके। लोगों ने फोटो कैसे खिंचवाए हैं, अगर आप ध्यान से देखो उनको फोटोज तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये लड़ जाएंगे। मतलब एक्सप्रेशन आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी तैयार हैं हम, आ जाओ पहलवानी करना है। मतलब कोई एक्सप्रेशन, इमोशन तो दिखता नहीं। अगर चेहरे पर भी देखेंगे तो एकदम से टाइट, मतलब यार क्या इंसान हो तुम लोग भी, क्या फोटो खिंचाते हैं। बट एक्चुअली दैट वाज आई मस्ट से द रेज ऑफ दोज डेज एंड पीपल यूज्ड टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाट दे थॉट दैट टू बी सीरियस इज समथिंग एज ग्रैंड एंड नोबल। तो सीरियस दिखना एंड ऑल सच थिंग्स। तो एक्चुअल में एंजॉय तो बहुत लेते थे, जिंदगी का मजा तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो जो पिछली जनरेशन जा रही इस दुनिया को छोड़ करके उन्हीं ने अच्छे से लिया हुआ है, सारी चीजों का एंजॉय किया है। बट जो ये एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं ना, आज हम लोग क्या क्या स्माइल देते हैं, है ना। स्माइल छोड़ो, पाउट के दौर में आप आ गए हो, कितने पाउट्स मिलते रहते हैं, ऑल सच थिंग्स। तो आज तो हम लोग चाहते हैं कि यार फोटोग्राफ ऐसा हो ना कि बाद में भी देखे तो मुस्कुराहट आ जाए चेहरे से। That is, all the three stood together, smile through hair. अब भाई जिनके पास बाल होंगे वो बालों के जरिए मुस्कुरा लेंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो क्या करें, है ना। तो उनके लिए बात नहीं है, जिनके पास बाल नहीं है उनके लिए बात नहीं है। आप खास तौर से देखते होंगे समुद्र के किनारे या लहरों के आसपास जब हमारी गर्ल्स होती हैं तो आमतौर पर उनके बाल खुले होते हैं, वहां वो चोटियां लगाकर नहीं जाती हैं, है ना। और खुले हुए बाल लहराते हुए हवा में कई बार ऐसा होता है कि फेस के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा आप उसके इमेजिनेशन में जाइए, हल्का सा फेस को कवर किए हुए जो बाल होते हैं और उसमें भी हल्की सी मुस्कुराहट जो दबी हुई बीच से निकल कर आती है, वाह व्हाट अ किलिंग एक्सप्रेशन दैट इज। एंड दैट एक्सप्रेशन एक्चुअली कैमरामैन वाज ट्राइंग टू कैच। वो एक्सप्रेशन पर आप जाइए कि क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या भाव होता है जब वो बालों के जरिए, बालों के बीच से मुस्कुराहट नजर आ रही होती है। आप झांक के देखिए थोड़ा सा। एट द अंकल विद कैमरा, सामने मेरे अंकल थे। अब वो अंकल थे, कैमरामैन थे, वट एवर, बट या अंकल थे और उन्होंने कैमरा ले रखा था। तो अंकल की तरफ देखते हुए मुस्कुराना था उड़ती हुई जुल्फों के बीच से। वो फोटोग्राफ एक्चुअली
आप समझ सकते हैं ना, फोटोग्राफ जो खींचा गया उसका एक्सप्रेशन क्या है उसको समझिए। अ स्वीट फेस, सच कह रहे हैं। एक मुस्कुराहट जो होती है ना, हमारे चेहरे की अहमियत को बदल देती है। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट हमारी कीमत बदल देती है, हमारी कीमत को बढ़ा देती है। कैन नॉट से, है ना, वो जो मुस्कुराहट चेहरे पर आती है ना, तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है। आप मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना ही चाहते हैं, हमेशा देखना चाहते हैं, और वो जो स्वीटनेस दिखती है, इसीलिए कहा जाता है ना कि हमेशा मुस्कुराते रहो, है ना। और हमेशा हंसने मुस्कुराने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जल्दी बुढ़े नहीं होगे। सोच लो, जल्दी बूढ़ा होना है तो बने रहो सीरियस ऐसे, लाइक दिस, किसी से ना बोलो, किसी से ना मुस्कुराओ। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा चार्म आपके ऊपर बना रहे, तो थोड़ी मुस्कुराहट अपने ऊपर रखे रहे, स्माइल अपने आप बना कर रखिए। एंड अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। एक्चुअली ये मेरी माँ का टाइम है, अभी मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी माँ 20 या इसके आसपास थी और मैं पैदा नहीं हुई थी। मैंने तब की फेस अपनी माँ की देखी है, एंड व्हाट अ फेस दैट वाज, स्वीट फेस। मदर का वो कितना प्यारा सा चेहरा था। वैसे माँ तो हमेशा प्यारे चेहरे वाली होती है, बट यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ माँ के प्यारे चेहरे की बात नहीं चल रही यहाँ पर। इट्स लाइक द sweet face of everybody was a smile on the face and living around the age of 20. 20-22 साल के आसपास की जो उम्र होती है, उसमें जो चेहरे की चमक होती है, जो मुस्कुराहट होती है, जो खुशी होती है, वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट करता है। और उस चेहरे को देखकर, उस मुस्कुराहट को देख करके कोई भी बाद में एक जॉय को फील कर सकता है, एक आनंद को फील कर सकता है, खुशी को फील कर सकता है। तो सारे लोगों के बारे में वो बात है जो इन्होंने कहा हुआ है, बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी, और वो सागर विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। बदलाव तो सब में होता है, लेकिन कुछ में बदलाव दिखता है और कुछ में बहुत कम दिखता है। ये सागर जो है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि हमेशा इसकी लहरें ऐसे चलती रहती हैं, कभी समझ में नहीं आता है कि इसमें बदलाव हुआ भी है या बदलाव नहीं हुआ है। बट यस, चेंज्ड लेस, कंपैरेटिवली दूसरी चीजों से इसमें कम बदलाव होता है। क्यों? इसका सेंस समझिए। एक जो छोटी सी नदी होती है, गर्मी का सीजन आता है सूख जाती है, बारिश का सीजन आता है उसमें बाढ़ आ जाती है, होता है कि नहीं? लेकिन सागर में क्या होता है? अब ऐसा थोड़ी है कि सागर में भी बारिश के वक्त में भी जल का जो लेवल हो, वाटर का लेवल हो, सेम हो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, गर्मी के टाइम में थोड़ा बहुत घटता है, लेकिन क्या हमें वो नजर आता है? हमें समझ में नहीं आता कि सागर में कब पानी बढ़ा और सागर में कब पानी घटा। चेंज्ड लेस, कंपैरेटिवली हम इंसान हैं, हमारी बर्थ होती है, हम यूथ में आते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं, जिंदगी को जीते हैं, और इतना तेजी से बदलाव होता है कि 50 साल 60 साल के बाद इस दुनिया को अलविदा कह देना पड़ता है आमतौर पर। एक सागर है, बदलाव उसमें भी है, बट चेंज्ड लेस, हमसे कम। क्यों? क्योंकि उसमें गंभीरता है, उसमें स्थिरता है। जो स्थिर होते हैं, जो गंभीर होते हैं, उनमें बदलाव होता है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं होता, लेकिन कितना होता है? लेस। चेंज्ड लेस, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। उनके नाजुक खूबसूरत दिखते हुए पैरों को लगातार अपने पानी से, अपने वाटर से धुल रहा है। अब आप समझ रहे होंगे, पानी साफ सुथरा हो और पानी में आप खड़े हो जाएं तो आपके पैर जो होते हैं वो साफ बिल्कुल दिख रहे होते हैं, और ट्रांजिएंट हैं, अस्थिर हैं। क्यों? क्योंकि जो लहरें आ रही हैं वो कभी कभी धक्का मार रही हैं, तो चलते हुए पानी में थोड़ा सा लहर जैसा एक्सप्रेशन वो लेकर आ रहे हैं। एंड टेरिबली ट्रांजिएंट, बुरी तरह से ये ट्रांजिएंट है, अस्थिर है। गुड मॉर्निंग डीएन। ओके, तो ये सारी एक्सप्रेशंस हम लोगों ने पहले में देखा कि किस तरह से माँ कजिन्स के साथ सागर के किनारे खड़ी, मुस्कुराती हुई, जिनकी लहरें लहराते हुए जुल्फ, क्या खूबसूरत स्वीट फेस, और वो कुछ 20 साल की रही होंगी, 20-22 साल की रही होंगी जब का ये एक्सप्रेशन है। Some 20 or 30 years later, she laughed at the snapshot.
अक्सर जैसा होता है, हम लोग भी फोटोग्राफ्स लेते हैं, फिर 20-22 साल के बाद जब बैक अपने फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है, जैसे मुझे भी आती है। कैसे? अब 20-22 साल पहले मेरे पास बाल थे, अभी मेरे पास बाल नहीं है। तो कभी कभी तो हमारे साथी लोग हमसे पूछ लेते हैं, यार तुम्हारे पास बाल थे? अब उनको मैं क्या बताऊं कि भाई सबके पास बाल होते हैं, बाल बीच में गायब होते हैं, है ना? Exactly, that's what I want to tell you. The different kind of feelings we have related to. कभी हम बहुत दुबले पतले होते थे, जैसा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। कभी हम पास्ट में अपने फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो समटाइम्स आई फील लाइक एग्जैक्टली इज इट मी, है ना? तो वो होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो व्हेन वी लुक बैक, अपने आप में हंसी भी आती है, मस्ती भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो दो फर्स्ट लाइन जो हमें 20 और 30 ईयर्स लेटर, मतलब अगर माँ पहले 20 ईयर्स की रही होंगी, उनमें 30 प्लस कर दिए 50 की हो गई, तो 50 साल की जब माँ हो गई हैं तो फिर से अपने उस पहले वाले फोटोग्राफ्स को देख रही हैं, उसको देखिए। सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट। वो जो स्नैपशॉट था, वो जो फोटोग्राफ था, उसको देखकर मेरी माँ हंस पड़ती थी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो अक्सर कहती थी, अरे देखो ना बेटी और डॉली को देखो, कितनी छोटी छोटी थी, कितनी नन्ही नन्ही थी, और कैसे लग रही, कैसे उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ रखा है। बेटी एंड डॉली जो पोएटेस की कजन्स थी, जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया था, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, अपनी ओर इशारा नहीं कर रही हैं। चेंजेस खुद में भी हुए हैं, लेकिन खुद के चेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, आप कभी देखे भी होंगे, बड़े बुजुर्ग ऐसे बात करते हैं, अरे देखो वो बेटी एंड डॉली है, कितनी छोटी छोटी थी, आज देखो 2 बच्चों की मम्मी हो गई, जितनी छोटी खुद थी उतनी छोटे छोटे बच्चे उनके हो गए। व्हाट आई वांट टू से, सिंपली दे ट्राई टू कैच द मोमेंट ऑफ द लास्ट लाइफ थ्रू देयर फोटोग्राफ्स। मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ एक तरीका है वक्त को कैच करने का, और वो है आप फोटोग्राफ्स में किसी चीज को कैद कर लो, या आप लिटरेचर में लिखकर किसी चीज को कैद कर दो। विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो सोनेट लिखी थी, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, उस सोनेट में भी उन्होंने वक्त को कैच करने की कोशिश किया है, और ये कोशिश किया है कि किस तरह से अपने फ्रेंड जो विलियम हर्बर्ट थे उनको इमॉर्टल किस तरह से बनाए। तो उनको एक ही बात समझ में आई कि अगर वो विलियम हर्बर्ट को अपनी इस पोयम में लिख देते हैं, अपनी सोनेट में लिख देते हैं, तो जब तक इस दुनिया में लोग पढ़ते लिखते रहेंगे, उनके फ्रेंड विलियम हर्बर्ट इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, इमॉर्टल रहेंगे। वो उस जमाने का एक आप कह सकते हैं फैशन था, तरीका था, जिसमें लोगों के वक्त को कैच किया जा सकता था। लेकिन फोटोग्राफ क्या करता है, वक्त को ठहरा देता है। आप 30 साल पहले कैसे थे, कोई और तरीका नहीं है सिवाय फोटोग्राफ्स की कि आप देख सको कि आप 30 साल पहले कैसे दिखते थे, 10 साल पहले कैसे दिखते थे, और जब 60 साल के हो जाएंगे तो भी आप 10 साल पहले कैसे दिखते थे। सिर्फ वक्त को केवल और केवल फोटोग्राफ कैच करके रख लेता है। तो 30 साल 20 साल पहले बेटी एंड डॉली कैसी दिखती थी, माँ उनको देख करके हंस रही हैं। शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वक्त बदल जाता है, आपको 20-25 साल में फैशन बदल जाता है। 20 साल पहले का आप फैशन देख लीजिए और आज का फैशन देख लीजिए, आपको 20 साल के पहले वाले फैशन को देखकर थोड़ी हंसी आएगी, अरे ऐसे लोग होते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। आज आप कहेंगे हाँ ये ठीक है। और यही उम्मीद हम करते हैं 20-25 साल के बाद फिर, कि 25 साल के बाद जब अगली जनरेशन आएगी ना, वो जब फ्लैशबैक में जाएगी हमारे फोटोग्राफ्स में, अच्छा ऐसे कपड़े लोग पहनते थे, इस तरह का कपड़ा होता था, ये कौन सा फैशन है, बड़े अब्सर्ड लुक है, दे वुड से, क्योंकि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो तो हम लोगों को ये सागर के किनारे घूमने टहलने के लिए किस तरह से इन्होंने ड्रेस कर रखा था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वो जो जिंदगी का एक दौर है, यहां पर एक बड़ा दर्द भरी बात है, वो सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो गुजरे हुए वक्त की बात थी, जब सागर में जाकर, सागर के पास जाकर के हम हॉलीडेज मनाते थे, छुट्टियां मनाते थे, मामा के यहाँ घूमने जाते थे, मौसी के यहाँ घूमने जाते थे, बुआ के यहाँ घूमने जाते थे, रिश्तेदारों में चले जाते थे, यहां घूमना है वहां घूमना है, सब करते थे। एक आज का दौर है, सब कुछ है, कहीं नहीं जा पाते,
सब कुछ है, कहीं नहीं जा पाते हैं। दैट वॉज पास्ट। ये जो हॉलीडेज है ना, वो सी हॉलीडेज हो या कोई हॉलीडेज हो, वो गुजरा हुआ वक्त हो गया है। जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसे शामिल हुई, फिर कोई वक्त ही नहीं मिला। माइन इज हर लॉफ्टर। क्यों? क्योंकि फिर मेरी हंसी ही उनकी हंसी हो गई। ये पेरेंट्स के बलिदान की बात है। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, समझने की कोशिश करिए। अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। किसके लिए? हमारी खुशी के लिए। हम खुश हो सके इसलिए वो अपना हॉलीडेज बंद कर देते हैं। हम खुश हो सके इसलिए वो अपना आराम, सोना बंद कर देते हैं। हम खुश हो सके इसलिए अपने लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना बंद कर देते हैं। ऐसा कभी कभी लगता है कि माइन इज हर लॉफ्टर। कभी जो खुद हंसती थी मेरी मां, आज उसको अपनी हंसी दिखती है मेरी हंसी में। वो स्नैपशॉट का वक्त, वो हॉलीडेज का वक्त गुजरा हुआ वक्त हो गया। आज तो उसके चेहरे पर मेरी वजह से हंसी हो सकती है, बाकी उसके जिंदगी का कोई हॉलीडेज नहीं बचा। इतना बिजी शेड्यूल हुआ, ऐसा जिंदगी ने उलझाया कि अपने लिए हंसने का वक्त नहीं रह गया है, मुस्कुराने का वक्त नहीं रह गया। और अब माइन इज हर लॉफ्टर। अब तो उनकी हंसी मेरी हंसी हो गई है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। वक्त गुजरने के साथ बोथ राय, दोनों बेरुखे से हो गए हैं, बेजान से हो गए हैं, स्टैरिल से हो गए हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं ना जिनको हम कभी सहन ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये वक्त का भी अजीब सा दस्तूर है। जिस मां के बगैर हम बचपन में एक पल नहीं रह पाते थे, जिस बाबूजी के बगैर हम बचपन में एक पल नहीं रह पाते थे, एक ऐसा वक्त भी आता है जब एक लंबा उम्र, लंबी जिंदगी गुजारनी पड़ती है उनके बगैर। और लेबर्ड ईज, आसान नहीं होता इस लॉस को जीना, आसान नहीं होता इस नुकसान को जीना, बड़ा मुश्किल होता है। बट हम लेबर करते हैं। लेबर मतलब अपने आप को इतना इंगेज कर देते हैं, इतना बिजी कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं कि उस लॉस को भी हम इजीली जी जाएं। क्योंकि उस लॉस को याद करते रहे तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी मां जो कभी खुद मुस्कुराती थी, फिर कभी मेरी वजह से मुस्कुराती थी, कभी जो मेरी मुस्कुराने की वजह बनती थी, आज सब बेरुखे हो गए, सब स्टेरिल हो गए हैं, कहीं पर खुशी नहीं है। और वक्त ने एक ऐसा जख्म दिया है जिस जख्म को न चाहते हुए भी बड़े ईज के साथ, बड़े आराम के साथ हम उस जख्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसे? लेबर के साथ, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, जिंदगी को बिजी रखते हुए। विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हमने उस लॉस को लेबर कर करके आसान बना लिया। कहने का मतलब सच में उस नुकसान को बर्दाश्त करना मुश्किल था, बट हमने अपने आप को काम में ऐसा बिजी किया कि उस नुकसान को भी हम बर्दाश्त कर गए। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब मां फिर से लगभग आप 20 साल फिर से गैप में जाइए। तीसरा भी लगभग 20 इयर्स की बात कर रहा है। सेंस को समझने की कोशिश करिए कैसे। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जितने वर्ष तक वो गर्ल लिव्ड, कितने वर्ष तक? लगभग 20 वर्ष तक वो जीती थी, उतने वर्ष तक हो गए हैं, वर्ष हो गए हैं उनको डेड हुए। तो लगभग 20 साल हो गए उनके गुजरे हुए। तो 20 साल का शुरुआत, 20 से 30 साल का बीच, और 20 साल हो गए उनको इस दुनिया को छोड़े हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, अब ऐसे हालात के लिए हम क्या कहें? देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइलेंस है। यहां आप रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस में वर्ड को रिपीट किया गया है।
और थॉट को भी रिपीट किया गया। मतलब वक्त गुजरता चला गया और वक्त गुजरने के साथ हमने यह देखा कि किस तरह से हमारी मां हमको छोड़ के चली गई। 20 साल लगभग हो गया उनको गए हुए। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया को सबको छोड़ के जाना है, सबको इस दुनिया से दूर होके जाना है। और एक वक्त तो ऐसा हर किसी की लाइफ में आना है जब उसे तैयार रहना है अपने लव्ड वन के बगैर रहने का। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी वर्ड्सवर्थ के बारे में कि लूसी को कितना लव करते थे, लेकिन उसके बगैर भी रहना उन्होंने सीख लिया। ऐसे ही एक चाइल्ड अपनी मां को कितना लव करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसके बगैर एक पल रहना मुश्किल हो जाता था, फिर उसको ही छोड़ना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सर्कमस्टेंस है, एक ऐसा हालात है जिसके बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि इसके बाद हमारे आसपास सिर्फ एक चीज बसती है, और वो क्या होता है? साइलेंस। वो सिर्फ हमारी खामोशी होती है। कभी कभी आप खुद महसूस किए होंगे जब आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। एक तकलीफ होती है जब आप रो लेते हैं, आपके आंखों से दर्द छलक पड़ता है। लेकिन एक तकलीफ वो होती है जब आप रो भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तकलीफ का जो बोझ है ना बहुत भारी है। तो आप क्या करते हैं? आप शांत रहते हैं। ऐसे लॉस को जब हम याद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के चले गए, हमारे लव्ड वन छोड़ के चले गए, इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ पेरेंट्स, इट्स मैटर ऑफ लव्ड वन। जब हम ये याद करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें इस जिंदगी को लेबर करते हुए, परिश्रम करते हुए उनके बगैर रहना है जिनकी वजह से हमारा वजूद है, तो हम क्या कर जाते हैं? साइलेंस में चले जाते हैं, हम खामोशी में चले जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आता कि हम एक्चुअल में क्या करें। दिस इज व्हाई इट साइलेंसेस। अब तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ खामोशी और खामोशी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे अगले वर्क के साथ कंटिन्यू रहेंगे, और आप लोग रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हर दिन वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन सेशन। एंड एज यू सी, इट्स अ फ्री क्लास. Those who are interested to be enrolled here, simply message us on our telegram number 9369542072 with your name and the course name. We will include you in our group there. Simply you will receive the notification of the class every morning between 7 and 8. That's all from me. Thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning, and keep working hard. Thank you very much.